लेक्चर नंबर 1 रे आपण मानक स्वागत। आज वीडियो लेक्चर रे आमे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स ऑनर्स रो कोर्स 7 को डिस्कशन करिवा। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व गोटे छोटा रिक्वेस्ट रहइबो जो मैं हमर चैनल रे जोड़ी ही कि रही चंती सेकंड सेमेस्टर रो बिकॉज़ सेकंड सेमेस्टर रो ही मो वीडियो पकेवा स्टार्ट करची जेतेबेले आपनकर सेकंड सेमेस्टर थिला। तो आप मोर टीचिंग स्टाइल प्रति प्रायतः अवगत थे मुझे पढ़ाए नॉर्मली मु पढ़ाए एंड मु ऑलरेडी प्री नोट करके मु बुझाई दिए ये आप जानते मो खातार एमती नॉर्मली करके बुझाएनी तार गोटे रीजन हूँ कि लेट हम कोर्स सरबनी एंड अधा अधूरा पाठ नहीं कि आप कौन करेंगे से मुझे को स्क्रॉल डाउन करके बुझाऊँ सो दैट कि आपण मैंने एकाथरे नोट सहित करेंगे एंड आप बुझी पारे। तो आज जो पेपर अच्छी मुझे सेमती ही आपंकर पेपर को कंप्लीट करी काफी बढ़िया रेस्पॉन्स मिलूँ। फिफ्थ सेमिस्टर कोर 11 मु अपलोड करी जो कि बहुत बढ़िया से रेस्पॉन्स मिलूँ पिलांकर। तो से लगे सेम को ही मु कंटिन्यू रखुची जे पर्यंत पिला एक्सेप्ट करुवे तो से मेथड रे मु पढ़ाऊथी। ठीक अच्छे जो चैनल आउ टे इम्प्रूव हम एंड पिला मानकर सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली आम किसी अलग प्लानिंग करवा कि वर्चुअल केमती आम बोर्ड नहीं कि आम डिजिटल बोर्ड नहीं केमती पढ़ाई पारिबा सी बहुत आगर कथा काफी टाइम अच्छी से बट एबे फिलहाल आपनकर एग्जाम आगु को आसी डिसेंबर एग्जाम हम एंड जमीक आप जानते कि एग्जाम आसिले मुझे सपोर्ट करने सब बेले आसी था सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दे था एंड सेकंड सेमिस्टर बहुत पिला सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं एंड से एग्जाम रे सब पड़ी एंड पिला माने बहुत थैंकफुल भी अच्छा एंड बहुत हैप्पी भी अच्छा कि से काफ़ी हेल्प मिल पारी। सो फाइनली कोर्स 7 को मुझे पढ़ाइबा स्टार्ट कर दूची 8-15 दिन भितर प्राय आपंकर सिलेक्शन क्वेश्चन अपलोड हो जीवो। रिक्वेस्ट करी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बिकॉज सब्सक्रिप्शन एंड लाइक वीडियो व्यूज ये सब जिनस काफ़ी मोटिवेशन देता है एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर एजुकेटर। तो आमको ये जिनस काफ़ी दरकार पिला भल रेस्पॉन्स दरकार। ठीक अच्छे तो चलते आम स्टार्ट करवा कोर्स 7 यूनिट 1 रो स्टार्ट आपणकर यूनिट नंबर 1 काफ़ी इंपोर्टेंट यूनिट अच्छी एंड थ्रू डेफिनेटली आपणकर इच एंड एवरी जमीती कि यूनिट लॉन्ग क्वेश्चन पड़े ये तो एकदम सत कथा। तेणु आपण कौन कौन सब इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फास्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल टॉपिक हूँ क्वासी लिनियर इक्वेशन ये मैथ रो गोटे पोर्शन अच्छी जो थी कि आम क्वासी लिनियर इक्वेशन विषय पढ़ी था। डेफिनेशन कौन एक्स वाई हम ये हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ये जो एक्स वाई हम ये हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जे कि आमर गोटे रिजन रे रहिबो एंड ये R2 रो प्रॉपर सबसेट हम है एक्स वाई जोड़ा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड यू हूँ ये कौन each and every जिनस लिखाई जाइए where एक्स वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये अच्छा यू एठी कौन यू हूँ अननोन फंक्शन यू इज अ अननोन फंक्शन एंड यू एक्स यू वाई इज सेम आज डेल यू डेल एक्स एंड यू आई हूँ डेल यू बाई डेल वाई। तो ये हूँ आपंकर पार्शियल डिफरेंशिएशन जितेबाला आपण पाखे मोर देन वन वेरिएबल थी व्हेन यू हैव अ मोर देन वन वेरिएबल then in that cases you will partially differentiate that function. So the case is when you differentiate one function like when you differentiate with respect to x then y will be treated as a constant and the similar pattern will happen when we will differentiate the function with respect to y then y x will be treated as a constant. तो ये प्रोसेस आपनकर रहइबो मल्टी वेरिएबल फंक्शन रे। ठीक अच्छे एंड आम बर्तमान ये कौन कर लेट अस कंसीडर यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एंड यू आई इज इक्वल्स टू क्यू ये आम यू एक्स को पी कंसीडर कले एंड सिमिलरली कंसीडरिंग यू आई इज इक्वल्स टू क्यू देन इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 1 रहिबो ये वाला इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन रहिला दैट विल बी बिकम सी कौन आमर हम ये टाइप रो बाकी आपन केवल रिप्लेस ही करागला दैट मीन एक्स वाई यू पी and q that means p in the place of ux and q in the place of uy। ठीक अच्छे ये जिनस है तमें आमको क्वासी लिनियर इक्वेशन ये आपंकर रहा एफ एक्स वाई यू पी कमा क्यू
बुझेला नेक्स्ट लिखिला कौन एफ एक्स वाई जेड व्हेन यू हैव अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल द सिमिलर पैटर्न विल बी हैपन बिकॉज देयर विल बी एडिशनल दिस वन जोटा कि हमर आर रहिबो एंड ये आपनकर हे जिवो एफ एक्स वाई जेड यू पी क्यू आर ठीक अछि यू एक्स विल बी ट्रीटेड एज अ p then uy is equals to q and similarly uz is equals to r बुझियला so this is a quasi linear equation then next एटी कोन लिखिला first order linear differential equation that means the standard form of the first order linear differential equation that will be axy ux bxy ui plus cxy uz okay is equals to dxy so this will be LHS and this will be RHS right that means z is equal to fxy this is a function of two variable there are two independent variable as you can see x y x y x y okay now moving to the question quasi-linear equation upon जानले when we have a function of two variable then the quasi-linear equation will be represented in a different form with the respect independent variable है पढ़िबा क्वेश्चन नंबर 1 को शो दैट द फैमिली ऑफ अ स्फीयर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देला आरंभ हला शो दैट द फैमिली ऑफ स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर ये वाला स्फीयर रा आपण नॉर्मली फार्मूला जानि चंती हला से फार्मूला थ्रू रे ही ये फंक्शन आपण कर देछि satisfy the first order linear differential equation that is yp minus xq is equals to 0 ये आपण कर देला so that the family of a sphere equation देला x square plus y square plus z minus c square is equals to r square जोटा कि आपण कर रहिबा दरकार कोन x square plus y square plus z square is equal to r square r is the radius here because sphere कथा कहूची तो that means it is the radius satisfy the first order linear differential equation ये आपनकर आपको satisfy करूची that means yp minus xq is equals to 0 now solving this question given equation हम पाखरे जो भी given equation थिला ताको as well as हमें रखिले that means x square plus y square plus z minus c square equal to r square will be treated as a equation 1 आपको equation 1 मध्य दे देले नेक्स्ट कोन करिबा आपको डिफरेंशिएट करिबा विथ रेस्पेक्ट टू x ये जिनस मन रखंतु ये आर प्रोसीजर हो जी या तो प्रोसीजर आपन को मन रखिया पड़े वी हैव टू रिमेंबर द प्रोसीजर नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड that means you have to differentiate this side also and this sides also right with respect to what with respect to x रे को differentiate करिवे right so by differentiating this function both side then we will get what we will get here that derivative of x square that is 2x and this will become y becomes 0 because this is a constant and here we will get 2z minus c into dz by dx is equals to 0 so taking 2 as a common it is dita jagare ame 2 common naba okay so taking this 2 common here we will get x plus z minus c dz by dx is equals to 0 so this 2 will become 0 when it multiplied with this 0 so this will become x plus z minus c dz by dx is equals to 0 so this means that we know that dz by dx is equals to p right so replacing this one with p we will get x plus z minus c into p equals to 0 so this means that z minus cp is equals to minus x and z minus c is equals to this p becoming the denominator that means minus x by p so this will be equation number 2 okay ये इक्वेशन रहिला हमें विथ रेस्पेक्ट टू x कले
ये जिनस मन रखु आम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कले तो आम पाखे रहा ये के जेड माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बै पी वी हैव अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है दीटा इंडिपेंडेंट ये वेरिएबल अच्छी सो दिस मीन्स दैट आम ये कौन वन विथ रेस्पेक्ट टू वाई वाई टर्म रे आम या डिफरेंशिएट करवा सिमिलर पैटर्न रे करवा दिस विल बिकम माइनस वाई क्यू दिस इज इक्वेशन नंबर 3 राइट now comparing equation number 2 and equation number 3 so comparing both हला जो थ्री कि हमरो इक्वेशन 2 रे केते थिला माइनस एक्स बाई पी एठी ये केते रहिला माइनस वाई बाई क्यू so in both the cases we have z minus c that is common here both the cases z minus c is common here so this means that we can write this one as minus x by p equals to z minus c equals to minus y by q so this means that we can say this will become minus x by p is equals to minus y by q right now by solving this we can have that is minus xq is equals to minus yp right and here this will the negative will be cancelled out and here we get xq minus yp equals to 0 that means that yp minus xu is equals to 0 right so hence we proved here hence the partial differential equation of first order linear differential equation will be verified जहाँ भी आपनकर गिवन देथियो बस ताको वेरीफाई करिकि आपण रखिबे तो सिंपल फंडा एटी कोन हला ना डिफरेंशिएटिंग कले अगर वेरिएबल 2 अछि दीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अछि दैट मींस हमें सेठी कौन कले डिफरेंशिएट कर देले बोथ साइड्स रे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई टर्म एंड देन कंपेयर कर देले राइट बढ़िया क्वेश्चन नंबर 2 को तो ये कौन कौन इक्वेशन नंबर 2 रे कौन सो दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व ये कर्व कथा पचार फैमिली ऑफ कर्व द इक्वेशन इज गिवन हियर दैट इज एक्स माइनस ए स्क्वायर y minus b square and z square equal to r square is given by ये वाला टर्म हमको दिया स्क्वायर p square plus q square plus 1 equal to r square simple steps रे को सॉल्व करिवे सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग partially with respect to x आको हमें partial differentiate करिवा when have a partial differential equation remember one thing there will be del instead of d okay linear differential equation हमें तले करूचे with respect to a single आम d यूज करुचे दैट मीन्स d by dx and partial differential equation ର condition कौन when we will differentiate function of function with more than one variable so in that cases we will differentiate each the function with the independent variable with the respective independent variable when we have two independent variable like x and y तो आम से केसेस रे आम कौन करबा ताको इंडिपेंडेंट वेरिएबल नबा दैट मीन्स व्हेन we consider the differential equation through x term रे हमें जब differentiate करिया partial then y term को हमें constant रखिबा and the similar pattern will be taken as when we will partial differentiate this the function with respect to y then x term will be treated as a constant हला को मन रखिया पड़िबो that means we have a function that is ये वाला function थिला हम so हमें कोन करिबा we will differentiate partially then हमें partial differentiate कले with respect to x कले then this will become 2x minus a right ये वाला टर्म हमरा 0 हे गला ये वाला टर्म and एठी ये केते हला del by del x minus a रो स्क्वायर y minus b रो स्क्वायर and z स्क्वायर बुझियला तो ये वाला हमें केते एटे हि जिवो 2x a into x minus a fx रो स्क्वायर तो 2x minus a into x minus a जा वैल्यू हबो 1 obviously and plus y minus b square that will become 0 and एठी रहिबो del by del x of z परिबा 2z into del z by del x right so एठी in both the cases we will apply here that means एठी केते हमें लिख परिबा को 2 common ne asya in both the cases let 2 will be taken outside the bracket so this will become
x माइनस ए प्लस जेड पी इक्वल्स टू 0 एटी p कौन लिया हला एटी हमर x is equals to p. Okay, so this will equals to 0. Now differentiating the same function with respect to y, similar function को हमें with respect to y differentiate कले, then we have हम पाखरे केते रहला एटर x minus a थिला एटर रहला y minus p एटी zp थिला एटी zq आसी. ओके, बाकी पैटर्न सेम रहिला. So this means that हम पाखरे both in both the cases हम पाखरे कोटा common कोटा रहिला. So from equation 1 and 2 equation 1 and equation 2 रु आमे कोन पाइले ये जिनस देखंतु एठी आमे x minus a रे वैल्यू पाइले y minus b रो वैल्यू पाइले कोठी इक्वेशन 2 रे. इक्वेशन 1 रे आमे कोन पाइले x minus a रो वैल्यू पाइले, राइट. सो बाय अप्लाइंग द वैल्यू y minus b इन द रेस्पेक्टिव इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थिला आपन जो मूल इक्वेशन टा थिला, इक्वेशन 1 पूर्व जो इक्वेशन टा हमर थिला फर्स्ट x minus a square plus y minus b square plus z square equal to r square. So here we got zp and zq. हमें x minus a रो वैल्यू केते पाइथिले minus zp पाइथिले, and similarly y minus b रो वैल्यू हमें पाइथिले minus zq. So ताकू ता प्लेस रे रिप्लेस कर देले, replacing this value with the with minus. Okay, so पचारला कोन find the partial differential equation of the following of the family of curve that is z is equal to fx square y square where f is an arbitrary function. एटी f कोन f होची गोटे arbitrary function. then हमको पचार कोन find the partial differential equation of the family of the curve. ये वाला हम पाखरे देइची एटी family of the curve, that means the function of two variable हला, where f is an arbitrary function. Partial differentiate definitely एटी हबो. So let u square y square because हम पाखरे एटी standard equation ये जो अछि हमें ताको u नै गले हला. z is equal to fu, let एटी let fu, तो u रो वैल्यू होची x square y square, तो एटी मो u रो वैल्यू को x square plus y square डेली, that means z is equal to fu. So differentiating equation 1 आप पाखरे equation 1 केते अछि ये वाला टर्म अछि हला, टर्म अछि equation 1. सेकंड नंबर differentiating to x टर्म रे हमें ताको differentiate करिवा, then हम पाखरे केते रहिबो ये del z by del x is equals to del x by fu, and ये हमें केते ये हे जिवो f dash u del u by del x हला. त माने del z by x is equals to f dash u del u by del x partial differentiate कले with respect. तो del z by del x रो वैल्यू हमें केते जानि छे, that means p is equals to f dash u del u by del x. So this means that एठी हमें याको केते लिखि देले del u by del x, तो ठीक अछि. देखंतु एठी del u रो जो वैल्यू अछि, u रो वैल्यू हमें केते पाइ नै थिले, ये वाला टर्म नै थिले x square plus y square, ठीक अछि. then p is equals to f dash u del by del x of u रो वैल्यू, u रो वाला वैल्यू अछि ताको एठी रिप्लेस करले x square plus square हला. then ये केते हला p is equals to f dash u, and ये वाला जो टर्म थिला एठी with respect to x टर्म में partial differentiate करछे तो y रो टर्म टा एठी 0 हो जिवो, राइट. so this will become f dash u into 2x, बुझियला. so this means that p is equal to केते हे गला f dash u into 2x, तो f dash u will become x, that is equation number 2 नला. f dash u is equals to p by 2x. again differentiating the same equation 1 with respect to y, we will have what f dash u is equals to q by 2y. एठी मते बेसी परिश्रम करिया पडुनी, आपन को जस्ट देखै दोछि, आपन आराम से करि परिबे सिमिलर पैटर्न रे हला. डिफरेंशिएटिंग x सेमति y सेमति आपन करिवे हला, मु करूनी सेटा को आपन. तो ये आपन को रहिला केते f dash u is equals to q by 2y. तो compare करिवे, in both the cases we will have f dash u as a common. So this means that p by 2x is equals to q by 2y. So that means
2py इज इक्वल्स टू 2qx 2 कैंसल आउट हो गला दैट मीन्स x इक्वल टू 0 सो ये वाला टर्म आसीगला देन हेन्स आमर ये वेरीफाइड हो गला बहुत सहज है आम जी भी प्रोब्लेम ये कले तो भावतु कि इन बोथ द केसेस द सेम पैटर्न आम पाखे पैटर्न ही सेम अच्छे कि पार्शियल डिफरेंशिएट करुचे अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई देन कंपेयर करुचे है ये किसी कॉन्सेप्ट आपको मन रखा पड़ो देर आर आई थिंक 50 पेज 40-45 पेज नोट्स करी आपको सबुठी ये सेम पैटर्न ही देखा मिले किसी आपको आइडिया लगी है काफी सहज हम बहुत सहज पेपर किसी कष्ट नुहे बुझेगा कि बढ़िया क्वेश्चन नंबर 4 को from the partial differential equation by eliminating the arbitrary function of the form the family of surface z is equal to xy plus f x square plus y square एटी हम कौन कही from differential equation by eliminating the arbitrary function of the form the family of surface z is equal to xy plus एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो चलतु यू नहीं जावा एठी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस कैन बी रिटर्न एज आम तो केमी लिख पार जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एफ आपको यू नहीं ये हो आपणकर जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ यू बुझेगा तो आम पाखे जो जेड फंक्शन आसीगला ताको आम डिफाइन बोथ द टर्म रे आम डिफरेंशिएट करबा विथ रेस्पेक्ट टू वाई टर्म रे करबा देन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टर्म रे करबा differentiating this function with respect so we will have am pagar kete raheba del z by del x is equals to y hala partially करूचे then amaro y रो जो टर्म आसीबो से कांस्टेंट आसीबो बिकॉज़ हम x टर्म रे करूचे so y into 1 x रो डेरिवेटिव होची कते 1 तो y plus f u रो होची f dash u and del u by del x जोटी एंड वैल्यू पुट करके आम वैल्यू को ये फाइंड आउट कले दैट मीन्स आम पाखे ये वैल्यू के आसला p माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x f डैश u बुझीपारे ये पोर्सन टा केमी डेल जेड बै डेल एक्स आम p नहीं गले एपटे ये y रही प्लस एफ डैश u ये आपंकर 2x बिकज ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छे वाई स्क्वायर टर्मटा तो ये 0 एंड एक्स स्क्वायर ये कते 2x है तो ये आपंकर हो p इज इक्वल्स टू y प्लस एफ डैश u इंटू 2x दैट मीन्स आपंकर ये हो p माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x एफ डैश u बुझीपारे तो सिमिलर पैटर्न रे y टर्म कर सारा पाखे ये रही q माइनस एक्स 2y एफ डैश u देन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दुईटा इक्वेशन पाखे आम कौन ना एफ डैश u पाखे रोचे कॉमन तो ये आपंकर केते रोची p माइनस वाई वाला होची 2x f डैश u एंड q माइनस x होची आपंकर 2y f डैश u सो कंपेयर करिवे इन बोथ द केसेस दैट मींस p माइनस y बाय 2x सेपटे ये नहीं कि आपण रखिले सेपटे q माइनस x बाय 2y राइट दीटा को सॉल्व कला पर हेंस दिस इज काफी सॉल्व है सिंपल तरीका रे बुझी पारथिबे 2y p माइनस y एपटे 2x तो आपंकर सॉल्व कले ब्रैकेट खोलिले एपटे ब्रैकेट खोलिले देन 2y 2 qx ठीक अच्छे वाई पी पाखक आपको नहीं आसले देन आ पाखक आपको नहीं आसले बुझीगला देन 2 2 कॉमन आसीगला 2 2 कैंसल आउट हो गला देन ये आपंकर रहिला दिस इज वेरीफाइड केते सहज अच्छी बुझी हो लैंग्वेजेस मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट क्लास रे आगु पढ़ेबा नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबा सो आउ गोटे लेक्चर से लगे ठीक अच्छे तो मुझे आसूची एवं आउ गोटे आपन को वीडियो बनईबी आज आफ्टरनून रे आपन को अपलोड करी तो जो मैंने देखुं तो फटाफट लाइक करूँ एंड वीडियो पसंद आसिले नोट आप मेकिंग करवा स्टार्ट कर दिंतु नोट मेकिंग फटाफट नोट मेकिंग करवा स्टार्ट कर दिंतु है सब किसी फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपन को अपलोड करा जाउची एंड जेतिक अवेलेबिलिटी कहूँ बहुत पिला अच्छा जो मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट करी तो समस्त सब किसी फ्री रे अवेलेबल करा जाउची बिकॉज आपन टिके बस सपोर्ट रख एंड ऑब्वियसली आम आहरी डेवलप करवा थैंक यू सो मच।